Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel, Paper World, where we are solving past paper questions of IGCSE Physics 0625. Currently, we are doing nuclear physics, which is the second last topic in the physics course of IGCSE. We've done up till like 4 topics up till now, and now we are starting with another topic today, that is radioactive decay. A pretty straightforward topic. So let's start. But before we start, kindly like and subscribe the channel. And if you find anything helpful over here, kindly remember me in your prayers. Thank you. So let's begin. Question number 1. Which row correctly describes an example of radioactive decay? Okay. Original nucleus is stable or unstable. Okay, we know that up till now, when a nuclei goes under a radioactive decay, it is an unstable nuclei. ठीक है? तो स्टेबल तो किसी फॉर्म में हो ही नहीं सकता, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है, वी आर गोइंग टू कैंसिल दैट. एंड सेकेंड ऑप्शन है third, B or fourth, be unstable. So let's go through these. Original nuclei is unstable. This box can be checked. Emission is alpha. Okay. Whenever there is a radioactive decay, there are 3 types of materials that come out. There is an alpha decay and there is a beta decay. So alpha decay, ठीक है. And there is a change of element. Okay, ये तीनों boxes ठीक है, but let's go through the other options as well. Unstable ठीक है, alpha ठीक है, no change of element यहाँ पर is not correct. Unstable ठीक है, beta decay भी ठीक है, no change of element फिर गलत हो जाता है. The nuclei that undergoes a radioactive decay is unstable. Might be beta or gamma, and there is a change of element. ठीक है, so P is our correct option. Moving on, question number 2. What happens in the process of nuclear fission? Electrons are added to the nucleus? No. Electrons are removed from the nucleus? No. Electrons have nothing to do with nuclear fission. The nucleus of 2 atoms split? Yes. This is the correct option. 2 atomic nuclei join together, that is a nuclear fusion. That doesn't come under nuclear fission. We were asked about nuclear fission. So C is the correct option. Question number 3. Which particle is absorbed by a nucleus to cause nuclear fission? So now, up till now, we all know that it is a neutron. Okay. We know that in fission, basically splitting of a large unstable nuclei happens, and 2 smaller nuclei, daughter nuclei, are formed, and a neutron is what collides with the unstable nucleus, and the process begins. Okay, so A is the correct option. Question number 4. Which statement describes how nuclear energy is released by fission in a nuclear power station? Okay, atoms join together to make molecules. No, this is not correct. Heavy nuclei split into lighter nuclei. Yes, this is correct. But let's go through the other options. Light nuclei join together. No. Molecules break down. No. So B is the only correct option that is applicable to nuclear fission. Question number 5. Fission and fusion are 2 types of nuclear processes. How does the total mass of the nuclides produced compare with the total mass of the original nuclide or nuclides in these nuclear processes? अच्छा, nuclear fusion or fission में the total mass of fission compared to the original nuclei भी less ही होता है, और in fusion as well, the product compared to the original nuclide less ही होता है, because some of the mass and some of the energy is lost. ठीक है, तो हमेशा दोनों processes में the total mass of the product will be lesser than the original nuclide. ठीक है, so this happens in fission and fusion.
as well. अच्छा जी. Question number 6. Which change occurs in the nucleus of radioactive atom during beta emission? In beta emission, a neutron is transferred into a proton and an electron is released as well. ठीक है. तो अगर हम we look at the options, तो option A states a neutron transforms into a proton and electron. Yes, this is correct. A neutron transforms into proton only. No. Electron is released as well. A proton transforms into a neutron. No. Neutron transforms into a proton and electron. A proton transforms into neutron only. No, this is also not correct. So A is the correct option. Question number 7. A radioactive material, a radioactive source is placed near a detector connected to a counter. 2 10 counts are recorded by the counter in 3 minutes. The background count rate is 20 counts per minute. So what is the corrected count rate for the radioactive source? Okay. They've given us 210 counts to be the ones जिसके अंदर background radiation already included है. They just want a corrected count rate जिसके अंदर सिर्फ radioactive material से जो counts record हो रहे हैं वो होने चाहिए. ठीक है. तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें 3 minutes के count rates available हैं. हमें 1 minute में कितने counts हैं ये निकालना पड़ेगा because the count per minute for the background count is given in count per minute. ठीक है ना. तो 220 by 3 जब हम करेंगे तो 70 counts per minute आएंगे which includes the background radiation का count and the count by the radioactive source. तो अगर हम 70 में से 20 minus कर देंगे तो 50 count per minute is going to be our answer, which are the counts that are being given by the radioactive source and they don't include the background radiation. ठीक है. तो A is going to be our correct option. Okay, I hope you got the idea. Question number 8. Which change is occurring in the nucleus during beta emission? Up till now, we already know that in a beta emission, neutron converts into a proton and electron is released as well. So let's look at the options. An electron and a neutron become one proton. No, that is not correct. An electron and a proton become one neutron. This is also not correct. A neutron becomes one proton and one electron. Okay. This is correct. A proton becomes one neutron and one electron. No, this is not correct. A neutron gets converted into a proton and then an electron is also released. Okay, question number 9. Thorium-230 is represented by the symbol this isotope is radioactive and decays to radium by emitting alpha particles. Okay, which nuclide is produced by this decay? Okay, we know that during an alpha decay, basically 2 neutrons and 2 protons are emitted. So nucleon number changes by 4 and proton number changes by 2. So here the 230, which is the nucleon number, is going to change by 4. So we'll subtract 4 from this, and the proton number we have to subtract 2 from it. ठीक है जी. तो 90 minus 2 would be 89. Sorry, 88. And 230 minus 4 would give us 226. ठीक है जी. तो अगर we look at the options, so option A is going to be our correct option. Because in all the other ones, the neutron number as well, the nucleon number as well as the proton numbers don't match with that of the alpha decay criteria.
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10. Polonium has a proton number equal to 84 and a nucleon number equal to 218. Polonium changes to astatine by emitting a beta particle. So a beta decay is happening over here. Which equation represents this decay? Okay. Polonium, in this option, the neutron number is 218, so it should be here, and the proton number is 84, so it should be here. So इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया. यहाँ पे भी यही है, the neutron number is not in the right and exact place. और फिर यहाँ पे बीटा डिके जो हो रहा है वो प्रोडक्ट्स में नहीं है, वो रिएक्टेंट्स में आ जाता है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पर दिस इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन. 218 है अपनी जगह पर, 84 अपनी जगह पर है. द न्यूक्लियन नंबर रिमेन्स द सेम ड्यूरिंग अ बीटा डिके एंड द प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस बाय 1, तो वो भी हो रहा है. यहाँ पर बिल्कुल सही रिप्रेजेंटेशन हो रही है ऑफ अ बीटा डिके वेयर द न्यूक्लियन नंबर there isn't any change in the nucleon number, it is represented by 0, and because of the change in the proton number, तो यहाँ पर -1 से वो represent हो रहा है. So C is our correct option. How do the sizes of the two nuclei produced in the nuclear fission reaction compare to the size of the original nucleus? Okay, both larger than the original nucleus? No, they are not larger than the original nucleus. One smaller and one larger than the original nucleus? No, this is also not correct, because both the nuclei produced after a nuclear fission are smaller as compared to the original nuclei. ठीक है, both smaller than the original nuclei. Yes, this is the correct option. And one smaller and one the same size? No, this is also not correct. So whenever there is a nuclear fusion happening, unstable nuclei, basically when a neutron hits this unstable nuclei, तो जी दो daughter nuclei produce होते हैं which are smaller than what the original nucleus was. ठीक है जी. Question number 12. A scientist was asked to separate the following equations into two categories: nuclear fission, nuclear fusion. Which equation shows nuclear fission? अच्छा, अब this question here is not correct. यहाँ पर सही से नहीं दिया गया. So we will just write the correct equations first. ठीक है, तो number 1 जो आपका option है, that was PU and 239 and 94, and then it decayed into PD 11246. Okay, I've written the corrected equations over here. If you look at the first equation, so this is correct. ठीक है, if you count all of these neutron numbers and then the 3 neutrons that have been emitted, so you will see that 1 is the correct option. ठीक है, ये जो 2 है और 3 है, उसमें अगर आप देखो तो emission जो है वही सही नहीं है. कितने न्यूट्रॉन्स एमिट हुए हैं, क्या हुआ है, कौन सी डिके हुई है, तो वही प्रॉपरली मेंशन नहीं है. फोर्थ वाला अगर आप ऑप्शन देखो तो वहां पे भी आपको बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया गया है न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन की इक्वेशंस को. ठीक है, तो 1 और 4 हमारे करेक्ट ऑप्शंस हैं, और हमारा ऑप्शन सी जो है दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, समटाइम्स देयर इज मिस प्रिंटिंग इन द बुक्स, तो this question was misprinted, so I thought that I'll just write the equations and then we'll solve it. Okay, moving on to question number 13. Carbon 14 has a proton number of 6 and a nucleon number of 14. Nitrogen 14 has a proton number of 7 and a nucleon number of 14. Carbon 14 emits beta particle to form nitrogen 14. Which nuclide equation describes this process? Okay, we have to see that carbon 14 has a proton number of 6 and a nucleon number of 14. So
option A में this is correct, okay. And then it converts into nitrogen 14 with a beta decay happening. So this is 14. The nucleon number remains the same and the proton number increases by 1, but in beta decay there should be -1 over here. तो वो नहीं हुआ, which represents the beta decay. तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो इसलिए isn't correct because न्यूक्लियन नंबर और जो प्रोटॉन नंबर है दे आर नॉट इन द राइट प्लेस. यहाँ पे कार्बन 14 और 6 बिल्कुल ठीक है. न्यूक्लियन नंबर रिमेन्स द सेम, प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस बाय 1 और बीटा डिके का बिल्कुल सही फॉर्म यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ है. तो सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन एंड दिस अगेन इज नॉट करेक्ट बिकॉज the nucleon number was 14 and the proton number was 6. So moving on, question number 14. Some radioactive nuclei decay to give new nuclei which are also radioactive. Part of series of decays is shown. How many decays involve the emission of a beta particle? Okay, now we know that in a beta particle, the nucleon number remains the same, whereas the proton number increases by 1. ठीक है? So let's look at the options. तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि 238 से 234 हो गया है और 92 से 90 हो रहा है. तो यहाँ पे तो कोई अल्फा डिके हो रही है. सो बीटा डिके तो यहाँ नहीं हो रही. अच्छा, इन द नेक्स्ट स्टेप द न्यूक्लियन नंबर रिमेन्स द सेम वेयर एज द प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस बाय 1. तो यहाँ पर आपको बीटा डिके अपना मिल रहा है. सो एक दफा तो यहाँ बीटा डिके हो रहा है. अगला पे 234 द न्यूक्लियन नंबर रिमेन्स द सेम वेयर एज द प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस बाय 1 अगेन. सो यहाँ पर फिर आपका बीटा डिके हो रहा है. ठीक है, आगे फिर 230 हो जाता है और 90 हो जाता है. यहाँ फिर अल्फा डिके हो रहा है, यहाँ पे फिर अल्फा डिके हो रहा है. तो 2 टाइम्स यहाँ पर इस सारे प्रोसेस में देयर इज अ बीटा डिके. सो ऑप्शन बी जो है दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 15. Radon decays by emitting an alpha particle. Which nuclide is formed in this decay? Okay, we know that whenever there is a alpha decay, तो the nucleon number reduces by 4 and the proton number reduces by 2. So let's look at our options. Here 219, 215 हो जाता है, ये तो बिल्कुल ठीक है. 86 से 84 हो जाता है. So this is a correct option, but let's look at the other options as well. इसमें तो 4 increase हो गया है. This is not the correct option. इसमें nucleon number is still the same, so this can't happen. And over here the nucleon number is also the same, तो ये नहीं हो सकता. The nucleon number has to reduce by 4. ठीक है, तो इसलिए ये these options aren't correct. Okay. Excuse me. Question number 16. Which equation represents the beta decay of lead-209? Okay. We know that if we are looking at a beta decay, we should see that the nucleon number stays the same, whereas the proton number increases by 1. So over here, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कुछ रिप्रेजेंटेशन आ गया है, which is not correct. यहाँ पर ये this is not a representation of the beta decay, and even if it was, तो it should have been on the product side. ठीक है. So here it is 209 and 82. ये I think beta decay को ही represent कर रहा है. थोड़ा misprint हुआ है because all options में यही है, but we will look at the correct one. Okay, जहाँ nucleon number is the same, the proton number increases by 1, और ये अगर बीटा का साइन यहाँ हो तो this is the correct representation. So C is the correct option. D में the proton number has reduced by 1, whereas it increases by 1 in the beta decay. So D option is not correct. Question number 17. The chemical symbol of uranium is U. The equation represents the radioactive decay of uranium-235. What are the numbers X and Y? Okay. Uranium has decayed actually 235 and 92. Here we know that
an alpha decay is happening over here. So we would know that the neutron number would reduce by 4 and the proton number would reduce by 2. So ये 92 से 90 हो जाएगा और ये जो है वो 235 से 231 हो जाएगा. तो अगर if we look at the options, तो 231 and 90 are represented by the option B. So B is our correct option. Question number 18. What is nuclear fission? Okay. The merging of two nuclei to create a heavy nucleus? No, this is not correct. It is not the merging of two nuclei. It is the splitting of an unstable nuclei when a neutron hits it. This is not the correct option. The process by which electrons are removed from an atom? No, this is not the process. The process by which stars generate energy? No, the stars generate energy by nuclear fusion. The splitting of nucleus to create two smaller nuclei? Yes, this is the correct option. Up till now आपको तो सारी ये definitions याद हो गई होंगी. बीटा decay क्या होता है, अल्फा decay क्या होता है, fission क्या होता है, fusion में क्या हो रहा होता है. Hopefully now you guys know that. Question number 19. An experiment is done to measure the radiation from a radioactive source that has a half-life of 10 minutes. The source is placed close to a detector that is connected to the counter as shown. The average background count rate is 20 counts per minute, which actually represents the background radiation. At the start of the experiment, the count rate recorded by the counter is 1000 counts per minute. Okay. What is the count rate 10 minutes later? Acha ji. Now, if we know that if half-life is after 10 minutes, so these 1000 counts would return into half, like 500 counts में ये change हो जाएगा. Because half-life में what you do is that you divide the original counters by 2. लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया है कि 1000 काउंट्स पर मिनट है और 20 काउंट्स बैकग्राउंड रेडिएशन भी है. सो वी हैव टू ऐड बैकग्राउंड रेडिएशन टू द काउंट्स, ठीक है, बाय द रेडियो एक्टिव मटीरियल, तो वो 1020 हो जाता है. और हाफ लाइफ के लिए यू हैव टू डिवाइड दीज बाय 2. तो इफ यू डिवाइड देम तो 510 काउंट्स रह जाएंगे आफ्टर 10 मिनट्स, ठीक है. तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा. अभी आगे वी विल डू हाफ लाइफ इन डिटेल, तो यू विल गेट अ वेरी क्लियर आइडिया अबाउट हाउ ऑल दिस वर्क्स. यहाँ पे तो बहुत सिंपल सा है, 10 मिनट्स की उन्होंने हाफ लाइफ दी हुई है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है. सिर्फ इसमें काउंट रेट आपको जो बैकग्राउंड रेडिएशन का था वो काउंट रेट में ऐड करना था और उसके बाद आपको हाफ लाइफ मिल जानी थी, ठीक है. तो ये तो बहुत सिंपल था, लेकिन हम अभी इंशाल्लाह पूरे तरह से ये टॉपिक को कवर करेंगे, तो यू हैव अ क्लियर कट आइडिया अबाउट हाउ वी डू इट. Okay, question number 20. The chemical symbol for sodium is Na. The equation represents radioactive decay of sodium 24. What are the numbers x and y? Okay. यहाँ पर जनाब एक बीटा डिके हुई है. So the nucleon number stays the same, ठीक है, and the proton number gets increased by 1. So 11 is going to increase to 12. और यहाँ पर -1 होता है और ऊपर 0 होता है बिकॉज न्यूक्लियन नंबर डजंट इंक्रीज. सो y की जगह पे 0 है और x की जगह पे 12 है. सो C is our correct option. Moving forward, a radium nucleus with a nucleon number 226 decays by emitting an alpha particle. The proton number of radium is 88. What are the nucleon number and proton number for the nucleus produced by this decay? Okay, because there is an alpha decay happening, so the nucleon number is going to decrease by 4 and the proton number is going to decrease by 2. So 226 जो है वो 222 हो जाएगा और 88 जो है वो 86 हो जाएगा. So let's look for options. So option A is our correct option.
Question number 22. A radioactive nucleus decays in two stages to produce this. Which two particles are emitted in this process? Okay. If there is an alpha particle and a beta particle, so this should reduce by 4 first, ठीक है? 220 से वो 216 रह जाएगा and then 86 से वो 84 रह जाएगा. And if a beta decay happens तो 216 होगा और ये 86 होगा. तो 1 alpha decay and 1 beta decay जो है ये बिल्कुल ठीक नहीं है. Alpha particle of proton. Okay. Alpha particle and a proton. अच्छा जी ये तो हो ही नहीं सकता. 2 alpha particles. अच्छा 216 हुआ. 216 के बाद फिर आपने 4 किया तो यस 212 हो जाता है ये. और 86 जो है वो 84 हुआ था एंड इफ देयर इज वन मोर अल्फा डिके तो ये 82 रह जाएगा. तो यस देयर हैव बीन 2 अल्फा डिकेस हैपनिंग इन दिस सिचुएशन. सो सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन. Question number 23. A radioactive isotope of carbon decays by beta emission to give an isotope of nitrogen and a beta particle. The equation for the reaction is shown. What is the value of X and Y? Okay, carbon 14 था और यहाँ पे जब बीटा डिके हो गया है तो the proton number must have increased by 1. तो यहाँ पे कार्बन के पास प्रोटॉन नंबर शुड बी 6 और बीटा डिके में यहाँ पर 0 होता है और यहाँ पर -1 से ये रिप्रेजेंट होता है. तो ये जो ऑप्शन है 6 और -1 के वो ए हमें दे रहा है. सो 23 का आंसर ए है. Question number 24. A nucleus of this decays into an isotope of actinium, which then decays into a nucleus of this. Which type of radiation have been emitted during the process? Okay. 1 alpha particle only. अच्छा alpha particle होता तो जी ये T228 से 224 हुआ होता और ये 88 से 86 हुआ होता. तो ऐसा तो नहीं हो रहा. तो इसलिए अल्फा पार्टिकल जो है वो गलत है क्योंकि जो न्यूक्लियन नंबर है दैट हैजंट इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड. ठीक है. तो 1 अल्फा पार्टिकल एंड 1 बीटा पार्टिकल ये भी इज नॉट करेक्ट बिकॉज अल्फा पार्टिकल में वो उसको 224 होना बहुत जरूरी था. 4 न्यूक्लियन नंबर में रिड्यूस होता है और 2 प्रोटॉन नंबर में रिड्यूस होता है. सो ये भी गलत है. अच्छा जी 2 अल्फा पार्टिकल्स भी नहीं हुए. 2 बीटा पार्टिकल्स यस 2 बीटा पार्टिकल्स माइट हैव हैपेंड क्योंकि ये 228 ही है. इट मस्ट हैव इंक्रीज्ड to 89 when there was 1 beta decay और फिर एक और बीटा डिके हुआ तो प्रोटॉन नंबर 90 हो गया and the nucleon number still is the same. So this was a beta decay and it happened 2 times. ठीक है जी. Question number 25. An isotope of polonium has a nuclide notion of this. The nucleus of this isotope decays by emitting an alpha particle. A beta particle is then emitted from the nuclide X as well. What is the notion for the nuclide X? Okay, there was an alpha decay, so 218 से जो X है वो 214 हो गया होगा और जो प्रोटॉन नंबर है वो should have decreased by 2 तो वो 82 हो गया होगा. उसके बाद there is a beta decay as well तो nucleon number would have remained the same and the proton number must have increased by 1. So 214 और 83 जो है नोशन होना चाहिए इस न्यूक्लाइड के जी. तो हमारा ये ऑप्शन हमें मिलता है डी से जिसमें 214 और 83 है. तो डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन. Question number 26. The nucleus of an isotope of nitrogen absorbs a neutron.
Okay, it then decays into an isotope of carbon and emits X. Okay, so what is X? If we look at this closely, तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर the nucleon number is the same and यहाँ पे जो proton number है that has decreased by 1. तो obviously यहाँ पर जो ये होगा it must be a proton. ठीक है ना, क्योंकि प्रोटॉन ही एक कम हुआ है. गैमा रेडिएशन तो हो ही नहीं सकती, बीटा पार्टिकल नहीं हो सकता क्योंकि उसमें फिर 7 से 8 हुआ होता प्रोटॉन नंबर. अल्फा पार्टिकल नहीं हो सकता क्योंकि द न्यूक्लियन नंबर्स जो हैं वो चेंज नहीं हुए. न्यूक्लियर नंबर हैज टू डिक्रीज बाय 4 एंड द प्रोटॉन नंबर हैज टू डिक्रीज बाय 2. तो अल्फा पार्टिकल भी नहीं हो सकता, गैमा रेडिएशन नहीं हो सकती, तो इसलिए प्रोटॉन. Question number 27. Radioactive carbon 14 decays to nitrogen 14 by the emission of a particle. Which particle has been emitted in this process? तो अगर आप यहाँ देखें तो न्यूक्लियन नंबर इज द सेम एंड प्रोटॉन नंबर हैज इंक्रीज बाय 1, तो यहाँ पे बीटा डिके हुई होगी. ठीक है जी, तो ए जो है इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट ऑप्शन. ठीक है जी, मूविंग ऑन. Question number 28. A nuclide of element X undergoes a beta decay. Which statement is correct? The nucleon number increases by 1. No, in a beta decay, the nucleon number stays the same. The nucleon number stays the same. Yes, this is the correct option. The product is another nuclide of isotope X. Not exactly. Proton number decreases by 1. No, the proton number increases by 1. So B is our correct option. Moving on to question number 29. The equation represents an isotope of radium Ra decaying to an isotope of radon Rn with the emission of a particle X. What is the particle X? Okay. So nucleon number was 226 and it has reduced to 222 and proton number was 88 and it has decreased to 86. Yani yahan pe there is a decrease of 2 and here it is a decrease of 4. So this X would be an alpha decay has happened over here. तो यहाँ पर आपको ये मिलेगा बिकॉज 4 आपका न्यूक्लियन नंबर से रिड्यूस हुआ है और 2 आपका प्रोटॉन नंबर से रिड्यूस हुआ है, तो यही हीलियम का जो एलिमेंट है वो ही यहाँ पर एक्स में प्रेजेंट होगा. ठीक है जी, बीटा डिके नहीं हुई, ये डिके भी नहीं हुआ और ये डिके भी नहीं हुआ, सो दिस इज गोइंग टू बी इट. Okay, question number 30. An atomic nucleus decays by one or more radioactive decay processes. What causes the proton number to increase by 1? Okay, increase by 1, decrease by 1, sorry. Acha. Alpha decay followed by a beta decay. Yes, this happens because when alpha decay happens na, तो it decreases by 2 and if जैसे if for example यहाँ x है जो 240 पर है और यहाँ पर 84 पर है, तो जब अल्फा डिके होगा तो ये 240 से 236 बनेगा और प्रोटॉन नंबर जो है वो 82 बनेगा. अब जब बीटा डिके यहाँ पर होगा तो ये 82 से 83 हो जाएगा प्रोटॉन नंबर और ये 236 ही रहेगा. तो द प्रोटॉन नंबर हैज जस्ट डिक्रीज्ड बाय 1 ओवर हियर. ठीक है ना, 84 से वो 82 हुआ था और फिर वो फिर 83 हो गया. तो अल्फा डिके फॉलोड बाय बीटा डिके और अल्फा डिके में तो वो डिक्रीज बाय 2 होगा, इसलिए बी ऑप्शन is not correct. बीटा डिके फॉलोड बाय एन अल्फा डिके, अगर बीटा डिके होगा तो वो 85 होगा और 85 से फिर वो 83 हो जाएगा. ठीक है, और बीटा डिके होगा तो वो सिर्फ 84 से 85 ही होगा. तो अल्फा डिके में
फॉलोड बाय अ बीटा डिके वो डिक्रीज बाय 1 ही शो करेगा. ठीक है जी. तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर. क्वेश्चन नंबर 31. A nucleus undergoes radioactive decay. The proton number increases by 1. The nucleon number does not change. Which particle has been emitted? So, जहां पे न्यूक्लियन नंबर रिमेन्स द सेम एंड प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस बाय 1 तो वो सिर्फ बीटा पार्टिकल में होता है. तो डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 32. A radioactive decay can be can be represented as shown. The equation is incomplete. In this decay, the nucleus changes by okay. Over here, there is a beta decay happening because the nucleon number is the same and the proton number has increased by 1. So over here, there should be a beta particle and representing a beta decay. तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस है एब्जॉर्बिंग अ न्यूट्रॉन, नो. Absorbing a proton, no, that doesn't happen as well. Emitting an alpha particle, no. Emitting a beta particle, yes. तो जब भी ऐसा होता है we know that a beta particle is emitting. यहाँ पे beta decay हो रहा है. Question number 33. A nucleus of americium emits an alpha particle to form a nucleus of neptunium. Which equation represents this decay? Okay, अगर alpha part decay हुआ है तो 243 has to reduce by 4 and 95 has to reduce by 2. Excuse me. So हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि the nucleon number is going to become 239 and this is going to become 93. ठीक है, तो we will look for options जिसमें हमें ये चीज मिल जाए. ठीक है, 243 से 247 हो गया है. नो, दिस इज नॉट करेक्ट. 243 से 243 ही रहा. बीटा डिके नहीं हो रही, अल्फा डिके हो रही है. they've clearly mentioned that. यहाँ पे फिर द न्यूक्लियन नंबर इज द सेम, तो ये भी नहीं. This is the only correct option जिसमें 4 nucleon number has been reduced by 4 and the proton number has been reduced by 2. और यहाँ पर एक हीलियम का एलिमेंट भी यहाँ पर बन रहा है. ठीक है. Question number 34. A nucleus of radioactive substance undergoes an A decay followed by a beta decay. ये मेरे ख्याल से अल्फा के लिए रिप्रेजेंट हुआ होगा. What are the nucleon number and proton number of the nuclide formed by both decays have happened? अच्छा, जब अल्फा डिके हुआ होगा तो जो आपका प्रोटॉन न्यूक्लियन नंबर है वो रिड्यूस बाय 4 हुआ होगा और वो 214 बन गया होगा. और प्रोटॉन नंबर जो है वो रिड्यूस बाय 2 हुआ होगा और 82 बन गया होगा. एंड जब फिर बीटा डिके हुआ होगा तो न्यूक्लियन नंबर सेम रहा होगा जबकि प्रोटॉन नंबर जो है वो इंक्रीज बाय 1 हुआ होगा. तो वी हैव टू लुक फॉर ऑप्शंस जहां पे हमें न्यूक्लियन नंबर 214 मिल जाए और प्रोटॉन नंबर 83 मिल जाए. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है जी. Moving forward, question number 35. Radioactive carbon-14 decays into nitrogen by emitting, I think ये अब a particle लिखा हुआ है. Particle, okay. The equation below represents the decay. What are the values of P and Q? Okay, over here, the nucleon number is the same and the proton number, okay, this is a beta decay. So the proton number must have increased by 1. तो यहाँ 6 आएगा और यहाँ पे -1 आएगा in place of Q. So P is going to be 6 and Q is going to be -1. So B is our correct option. Question number 36. A radioactive nucleus emits a beta particle. What happens to the proton number of the nucleus? अभी हमको अच्छी तरह याद हो गया है कि whenever there is a beta decay, beta emission, so the nucleon number stays the same and the proton number increases by 1. So B जो है हमारा वो is going to be the correct option. ठीक हो गया जी.
moving forward to our last question of this topic. A radioactive nucleus contains 138 neutrons. Now beware के उन्होंने आपको न्यूक्लियन नंबर नहीं दिया. They have given you the number of neutrons. The nucleus emits an alpha particle. How many neutrons are in the nucleus after it has emitted alpha particles? Okay, now we know that the nucleon number decreases by 4 in an alpha emission or decay because 2 neutrons and 2 protons are emitted. ठीक है, तो क्योंकि nucleon is number of protons plus number of neutrons, तो it gets reduced by 4. बट यहाँ उन्होंने न्यूक्लियन नंबर नहीं दिया हुआ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिए हुए हैं, तो सिर्फ 2 ही न्यूट्रॉन्स इसमें से माइनस होंगे एंड 136 न्यूट्रॉन्स रह जाएंगे. ठीक है, सो बी 136 इज द करेक्ट आंसर. Okay, we are done with this topic 5.5. So inshallah next video में हम cover करेंगे topic 5.6 which is half-life, which is very important as far as nuclear physics is concerned. So inshallah we'll be doing that. Up until then, take care of yourselves and Allah Hafiz.